Hello dosto, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to learn concept of real numbers. Okay, we will clearly understand what is the concept of real number and where is used, what is the importance of real number in mathematics. There is there is very much important in of a real number in mathematics, and everything in mathematics is the basis of real number. Okay, not perfect square. Any real number whose square is not negative is called a real number. Okay, and we can also define by other way like the combination of irrational number and rational number, or the combination of rational number and irrational number is called real number. Okay, or the rational number and irrational number together is called real number. Hope you understand this. And if we take our real number, then if it is uh, if its decimal representation is terminating or non-terminating repeating, then it is a real number. If it and if the real number which we have taken is non-terminating and non-repeating, or if the real number which we have taken is in decimal form and it is non-terminating and non-repeating, then it is irrational number. Okay, irrational form the real number. Let's come. What is completeness property? Okay, if we take a number line, and then every point on the number line corresponds to a unique real number. Okay, or we can say that every point on the real number line denotes, express a unique real number. A unique real number is just our कोई real number नहीं है. Okay, hope you understood it. And the unique real number that a point on the number line denote may be either terminating or non-terminating repeating, or non-terminating non-repeating. Hope you have understood it, because it is very easy. And you know what is number line? If you take a line and uh, infinitely expansion and infinity expansion, it will expand this side infinitely, it will expand this side, this line will expand, may expand, can expand both sides indefinitely. Okay, and here we start at 0 and it is 1 and it is 2. Then if you take real number that may be either terminating or non-terminating, repeating or non-repeating and non-terminating, then will be represented by a point. Okay, any point, and this is number line. Any real number lie on this number line. Okay, and one is a density property, which you have understood which will learn. Okay, density property we have just learned about. Completeness property. What is completeness property? Any point on the number line corresponds to a unique real number, and that real number may be either terminating or non-terminating repeating, or non-terminating and non-repeating. Hope you have understood it. Come on, let's learn about density property. Okay, and what is density property? Then if this is a number line, and this is 0, this is 1, this is 2, and this is -1, this is -2, and whatever may expand infinitely, then what is density property? Between every two real number there exist infinitely many real number. किसी भी दो रियल नंबर के बीच में infinitely many real number exist करता है. इतना रियल नंबर एग्जिस्ट करता है किसी भी दो रियल नंबर के बीच में कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और ना ही आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं. कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटली है. Hope you understood what density property. Then we are learning next thing related to real number. What is the next thing which we are going to learn? This is addition property of real number. Okay, addition property of real number. What is addition property of real number? There are many properties, or we may say that there is 5 property of addition of real number. What are that? First one is closure law. Closure law and addition and real number. Then what will happen? Sum of two real number. If a and b are two real number, then their sum will also be a real number. This is a closure property of addition of real number. Okay, hope you have understood it. Let's come where? Commutative property. Okay, or associative property. Let's come to commutative property. Commutative property. What is commutative property? If a and b be two real number, then a plus b equal to b plus a. मतलब a plus b का जो वैल्यू होगा b plus a का वही वैल्यू होगा. Hope you have understood it. Okay,
And what is the associative property? Then associative property is also associative property of real number, associative property of addition of real number. What it is? If ABC or associative property of real number, associative property of addition of real number says that if ABC are two real number, then associative property. We are learning associative property. Okay, associative property. Okay, what is associative property? If A, B, C, B, any two real number, then A plus B plus C equal to A plus B plus C. It is very easy. Hope you have understood it. Associative property ये कहता है कि अगर ABC कोई तीन रियल नंबर हो, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू associative property ये होगा कि A plus B को पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर C में ऐड करेंगे तो उसका एक वैल्यू आएगा, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा कि जब हम लोग पहले B plus C को ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको A में, पहले B plus C को ऐड कर लें, फिर उसके बाद A में ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू होगा। दोनों केस में जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। तो आपके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आपका जा करके चौथा नंबर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स? 0 इज द additive inverse, okay, of real number. What is this? This is that if or we write if A, B or real number, ठीक है? A कोई भी रियल नंबर हो, A का मतलब एनी रियल नंबर, ओके? A भी एनी रियल नंबर, देन क्या होगा? A प्लस 0, और 0 आपका एडिटिव इनवर्स आप जानते हो क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी रियल नंबर में जोड़ेंगे या 0 में से किसी भी रियल नंबर में से 0 घटाएंगे तो वो A ही रहेगा, वो कुछ मैंने उसका वैल्यू में ना ऐड करेगा ना उसमें माइनस करेगा। then A plus 0 equal to A minus 0 equal to A, ठीक है? या इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? और उसको एक तरह और कर सकते हैं कि A में हम लोग 0 जोड़ देंगे या फिर हम लोग 0 में A जोड़ देंगे, वैल्यू क्या आएगा आपका? A ही आएगा। अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट हियर वन symbol is additive inverse. What is it doing? It is doing that it is a real number, but it is neither adding nor subtracting. What? A real number if it is added or subtracted. अगर किसी रियल नंबर में हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा कुछ भी। अगर किसी रियल नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो रियल नंबर ही रहेगा। अंडरस्टैंड? दिस इज द additive identity of real number. Who is the additive identity of real number? Here 0 is the additive identity of real number. Hope you have understood it. Don't forget it, because forgetting is not good habit and understanding is a good habit. Try to understand every good thing. Okay, let's erase it. Come on. Then after this come a very important property, and this is what? This is existence of additive inverse. Additive inverse. Okay, additive inverse. What is additive inverse? Then it is the fifth property of a real number of addition. Okay, then what is this? This is very easy and simple. If A, B are real numbers, if A, B are real number or any real number, then its additive inverse क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों होगा? क्योंकि A में हम लोग A को माइनस करेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? या फिर माइनस A में हम लोग A को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है? होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर कोई रियल नंबर हमारा पास A है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस A होगा, ठीक है? अगर कोई हमारे पास रियल नंबर B है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस B होगा। अगर कोई हमारा रियल नंबर माइनस A है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा हमारे पास ये रियल नंबर है, ठीक है? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऐसे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ये रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक है? ये कैसे है? ये इस तरह से है। ये रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, ठीक है? क्या होगा? माइनस माइनस है, इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, और ये क्या है? प्लस है, ठीक है? तो हम लोग इसके जगह में क्या लिखेंगे? इसके जगह में आपको प्लस आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। आप ये अंडरस्टूड इट है? Good, because you are good, so you must have understood it. If you are bad, then you haven't understood, and you should become good. Then what will be the property of you if you will become good? You have to acquire the property of understanding, okay? In a quick way, in a very easy way, in very quick time, in less time, okay? Because within the given time, you have to do many things. And what is the given time? It may be either 1 second, 1 hour, 1 year, or 1 century years, okay?
and you can understood how much time you may have. Okay, come on. Let's learn about multiplication property of real number. Okay, multiplication property of real number. What will be the multiplication property of real number? It may be associative property, commutative property, closure property, and distributive property of multiplication over addition. Okay, then first of all we will learn closure property of multiplication of real number. What it is? Closure property of multiplication of real number is what? If a and b be two real number, then a into b equal to b into a. अगर a भी दो रियल नंबर हो तो a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू बराबर होगा. ठीक है, ये क्या है? ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर a और b दो रियल नंबर है तो a into b भी रियल नंबर ही होगा. आप यू हैव अंडरस्टूड इट. कम ऑन. And this is commutative property. What is commutative property? If a and b be two real number, then if you multiply a by b, then and b multiply b or multiply b by a, then in both cases the value will be same. Hope you have understood it because you are good student. And now we will learn about associative property of multiplication of real number. What is associative property of multiplication of real number? It is very easy, and it is if a b c be three real number, then what? Then a into b into c equal to a into b into c. अगर a b c तीन रियल नंबर हो तो पहले हम लोग a b c को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद c से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू उस वैल्यू के बराबर होगा. किस वैल्यू के बराबर होगा? जब हम लोग पहले b c को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों केस में क्या होगा? प्रोडक्ट का वैल्यू बराबर होगा. क्या होगा? बराबर. Hope you have understood it. Come on. There is one property more, and what is existence of multiplicative identity. Okay. Then what is multiplicative identity? Multiplicative identity. इसका मतलब ये हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था? हम लोग रियल नंबर में जोड़ते थे तो वही रियल नंबर आता था. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? रियल नंबर में उस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना चाहिए. व्हाट इट मे बी? इट मे बी 1, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाय ए रियल नंबर विद एनी रियल नंबर, देन इट वैल्यू रिमेन the same like that real number, not like 1. Hope you have understood it. Come on. Additive identity. Okay, if a be a real number, then a into 1 equal to 1 into equal to a. a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में हमारा जो वैल्यू होगा वो a ही रहेगा, बदलेगा नहीं. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. Then it was additive multiplicative identity of real number. Multiplicative identity of real number. Hope you have understood it. Come on. What is next? Next is distributive. No, existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse. हमारा additive inverse क्या था? माइनस a. ठीक है, माइनस ए करने से क्या आता था? माइनस ए करने से हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आता था. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, किसी रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है. जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता था, तो ए को उसके एडिटिव इनवर्स से जोड़ने पर क्या होता था? वो होता था आपका 0, जो कि क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था. उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर का वो रियल नंबर होगा, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चे? 1 है. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट. देन वी आर लर्निंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, देन हाउ वी कैन राइट इट? यू कैन राइट इट that if a be or real number, then its multiplicative inverse is a or a inverse. ठीक है, इनवर्स इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a to the power -1. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऐसा करने से क्या होगा बच्चे? ए को हम लोग ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आएगा. वो क्या है? वो 1 है. होप यू अंडरस्टूड इट. कम ऑन. देन come to what? Come to distribution of real number. ठीक है, distribution of multiplication of real number over addition. ओके, हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर एडिशन में. किस चीज के ऑपरेशन में? रियल नंबर के ऑपरेशन में. होप यू अंडरस्टूड इट. कम ऑन. देन व्हाट वी विल राइट? कम इन लर्न. आगे और सीखिए. तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है ये आपका? ये जो भी है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर. ओके, देन हाउ वी विल राइट? इफ a b c be any three real number. Okay, then what? a into b plus c equal to ac plus c, ab plus bc, or b plus c into a equal to
AB प्लस SC। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे SC होगा, AB SC, AB SC, तो क्या होगा AB SC। Have you understood this? What this is the distributive law of distributive law multiplication of real number over addition. Okay. Then we have learned about the concept of real number, and we may solve your example, but this example is not very hard. These are very easy, and at least exercise is also easy. And then we are leaving this, and we will learn in next video about what, about irrational number. Okay, representation of irrational number or real number. We will learn about this in next video. Okay, then goodbye. Take care of yourself. Okay, because taking care of yourself and your loved one is very necessary, and you may also take care of other. Okay, taking care is very good habit. Okay.